हेलो स्टूडेंट्स एम जी डिस्कस करिबा नंबर ऑफ रिलेशंस एंड नंबर ऑफ फंक्शंस। तो ये टॉपिक टा हमर बोर्ड एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट इथरो क्वेश्चन आंसर चांसेस बहुत है। ठीक अछि, तो आगे डिस्कस करिबा नंबर ऑफ रिलेशंस। लेट नेली आर बी द रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी। The number of elements of set A equal to m and number of elements of set B equal to n यूज कर। तो रिलेशन टा हमारा ऑलवेज करना सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी थाए। रिलेशन टा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी रा फॉर्मूला अछि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो दिस इक्वल टू m इंटू एन मिलगला। तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी मिलगला m इंटू एन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस from set A to set B equals to total number of subsets of A क्रॉस B। ठीक अच्छे, यदि हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B फाइंड कर देबा दैट इक्वल टू जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 टू द पावर mn। तो हमरो A क्रॉस B रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn अछि। तो हमको मिल गेला टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस रा फार्मूला 2 टू द पावर mn। तो m हियर अछि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A और n अछि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। ठीक अछि, तो ये फार्मूला यूज करके हम इजीली टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करि परिबा। तो गोटे पर्टिकुलर केस हमें कंसीडर करिबा इफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए अछि। तो इठी मु ए टू बी नेतली, तो हियर नेछि सेट ए टू सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू मु n कंसीडर कली। तले इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 टू दी पावर हमरो n इंटू n है जीवा। तो इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n स्क्वायर। ठीक अछि, यदि रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम a टू a थीबो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a थीबो n, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस रा फार्मूला 2 टू दी पावर n इंटू n इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n स्क्वायर। तो या पर बेस करी हम एग्जांपल सॉल्व करिवा। तो एग्जांपल नंबर 1 अछि if a is the set of even natural numbers। तो हमको गिवन देछि a is the set of even natural numbers less than 8। तो लेस देन 8 अछि माने 2 4 6। तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इक्वल टू मिल गला 3। ठीक अछि, एंड गिवन देछि b is the set of prime numbers less than 7। तो प्राइम नंबर तो हमरो 2 रु स्टार्ट हो, लेस देन 7 देछि 2 3 5। ठीक अछि, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इक्वल टू हमको मिल गला 3। देन देछि देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b equals to formula 2 to the power m into n अच्छे। तो 2 to the power 3 into 3 equals to 2 to the power 9। तो हमको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस रा आंसर मिलला 2 to the power 9। ठीक अच्छे, तो हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस डिस्कस हो गला। देन हमें डिस्कस करिबा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो नंबर 2 रे हम डिस्कस करिबे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे भी फार्मूला अछि। सपोज हमारा रिलेशन डिफाइंड अछि a टू a। ठीक अछि, a टू a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इक्वल टू n अछि। देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस रा फार्मूला, तो हमको फार्मूला मिलला 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n और दिस इक्वल टू 2 टू दी पावर n इंटू n माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन रा फार्मूला 2 to the power n square minus n equals to 2 to the power n into n minus 1। तो आगो टाइम नोट अच्छे the number of non-reflexive relations from और ऑन सेट ए। तो हमारे ए अच्छी a टू ए अच्छी तो ऑन ए ही गला। ठीक अच्छे,
तो नंबर ऑफ रिलेशंस रो जदि मो नंबर ऑफ रिफ्लेक्स रिलेशन माइनस कर देबी देन मते आंसर मिल जिवो नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशंस रा फार्मूला 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस है जीवो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इजीली फाइंड करि परिबा नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन रा फार्मूला 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1। तो नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन रा फार्मूला 2 टू द पावर n स्क्वायर माने नंबर ऑफ रिलेशंस माइनस नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक अछि। तो या पर बेस कर क्वेश्चन सॉल्व करिबा। तो हमर एग्जांपल नंबर 2 अछि द नंबर of reflexive relations on a set A consisting of n elements is equal to। तो हमारा number of element of A equal to हमको n given दे छे। तो total number of reflexive relations equals to तो हमको फॉर्मूला अच्छे तो 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1। तो हमको मिल थर्ड ऑप्शन टा करेक्ट अच्छे। ठीक अच्छे। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस रा फॉर्मूला 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1। तो हमें ये डिस्कस कर ले नंबर ऑफ रिलेशंस एंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन हमें डिस्कस करिबा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमें नंबर ऑफ रिलेशंस और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिस्कस करि सारे। ठीक अछि। तो we डिस्कस करिबा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। लेट R be the relation तो डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट A अछि एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इक्वल टू मो n रख लियो। ठीक अछि। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इक्वल टू n। देन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस रा फार्मूला 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। तो हमको फॉर्मूला मिल रहा 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2 और दिस इक्वल टू 2 टू द पावर n कॉमन नहीं गले n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमको नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस रा फॉर्मूला मिल रहा 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो गोटे एग्जांपल सॉल्व करिबा द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन सेट A इक्वल टू 1 2 3 4। तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इक्वल टू तो गिवन दे छे 4। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस total number of symmetric relations equal to formula 2 to the power n into n plus 1 divided by 2। तो equals to 2 to the power तो number of 4 अच्छी n equal number here 4 ना तो ये हमारा n है जीरो। ठीक है। तो 4 into 4 plus 1 divided by 2। तो दिस इक्वल टू तो ये 2 कैंसिल है जीवो 2 टू द पावर तो 2 इंटू 5 तो हमको मिल रहा 2 इंटू 5 तो इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस रा आंसर मिल रहा 2 टू द पावर 10। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन टा करेक्ट अच्छे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट हमें डिस्कस करिबा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक अछि। तो यहाँ पे हम एग्जांपल कंसीडर करिबा लेट A इक्वल टू 1 2 3। तो मो सेट A रे 3 एलिमेंट्स नै छै। तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस केमति फाइंड करिबा ना ए रूल टा यूज करिबा ईच पार्टीशन ऑफ ए सेट गिव्स एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। बस हमको सेट A रा नंबर ऑफ पार्टीशंस फाइंड करिबार अछि। हमको पार्टीशन मिल गला देन नंबर ऑफ पार्टीशंस इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस है जीवो। ठीक अछि। तो पूर्ण पार्टीशन मींस करना पार्टीशन मींस कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट होती वो नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए। तो हमें ए रो के नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड कर देबा तो सबसेट्स फाइंड कर देबा देन हमें कौन करिबा ना पार्टीशन मींस कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट भी होती वो नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए दैट हैव ए एज देयर यूनियन। तो हमें केमती फाइंड करिया मैं एग्जांपल तुमको एक्सप्लेन करछु। ठीक अछि। तो नंबर 1 पार्टीशन तो हमरा एलिमेंट्स अछि 1 2 3। तो क्लियरली देखा हमरा 1 इज सबसेट ऑफ ए अछि then 2 is a subset of A अछि then 3 is a subset of A। now देखो first subset second subset third subset all are disjoint अछि और non empty अछि। तो याको यूनियन कले हमको इक्वल टू A मिल जिवो। तो हमको फर्स्ट पार्टीशन मिल गला 1 ये 2 ये ला 3। ठीक अछि। तो ये पार्टीशन टा हमरो यदि मैं याको रिलेशन को चेंज कर देबी तो क्लियरली हमरो रिलेशन टा से जिवो। तो इतना हमको रिलेशन मिल जिवो 1 1 2 2
3 3 ठीक अच्छे। तो रिलेशन टा हमर क्लियरली आइडेंटिटी रिलेशन, रिलेशन टा हमर आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन टा ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक अच्छे। तो हमको गोटे केस मिलगला, देन हम सेकंड पार्टीशन फाइंड करबा 1 2 3। तो हमर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी गोटे पार्टीशन डेफिनेटली हबो। तो हमर कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट, तो मु जहां भी सेट नै छी तो गोटे तो सेट अछि ना, तो इथरे ए कंडीशन सैटिस्फाई करछि। तो क्लियरली हमर दिस वन ला हमर वन पार्टीशन। तो इथरे हमको सेकंड रिलेशन मिलि जिवो। तो रिलेशन 2 मिलला 1 1, बस यार खाली कार्टेशियन हमको a क्रॉस a रो एलिमेंट्स फाइंड करिवर अछि। 1 1 देन 2 2 then 3 3 then 1 2 then 2 1। तो नेक्स्ट अब 1 3 then 3 1 then 2 3 3 2 ठीक अच्छे। तो 3 2 5 तो ये 4, टोटल हमको 9 एलिमेंट्स मिलगला। तो क्लियरली हमर देख a क्रॉस a हमको 9 एलिमेंट्स मिलथिला, तो मु a क्रॉस a रो एलिमेंट्स फाइंड कर दिली। मोर सेकंड रिलेशन टा क्लियरली यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ठीक अच्छे। तो यूनिवर्सल रिलेशन इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देन हमें थर्ड पार्टीशन फाइंड करिबा 1, तो 1 सबसेट नहीं करी, देन 2 3 को सेकंड सबसेट नहीं करी, 2 3 ला सेकंड सबसेट। तो इथरो हमको रिलेशन मिले जीवो। तो यार a क्रॉस a फाइंड करले हमको 1 1 मिलिबो। तो यार a क्रॉस a फाइंड करले हमको 2 2 मिलला, देन 2 3 मिलिबो, देन 3 2 मिलिबो एंड 3 3 भी मिल जीवो ठीक अच्छे। तो ये रिलेशन टा भी क्लियरली हमर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देन देखो आ गोटे भी पार्टीशन हियर पॉसिबल अछि। जर मु 1 2 को गोटे सेट नहीं गली, देन 3 को सेकंड सेट नहीं गली, तो ये भी गोटे पार्टीशन ही जीवो। तो इथरो हमको रिलेशन मिल जीवो 1 2 रो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करिबा 1 1 देन 1 2 देन 2 1 देन आसीबो 2 2 ठीक अच्छे। देन 3, तो 3 3 रो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करले 3 3 आसी जीवो। तो रिलेशन टा भी हमरो क्लियरली इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक अच्छे। देन फिफ्थ केस हमें कंसीडर करिया हमरो 1 2 3 हे गला, 1 2 3 हे गला, देन हमरो 1 3 गोटे नहीं जीवो एंड 2 गोटे सबसेट नहीं जीवो ठीक अच्छे। ये सब जहाँ भी मु पार्टीशंस फाइंड करछि कंडीशन सब सैटिस्फाई करछि। ऑल आर कंडिस्जेंट थिबो, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए भी थिबो, तर यूनियन टा डेफिनेटली इक्वल टू ए होतो। तुम चेक भी करि परियो ए कंडीशन डेफिनेटली सैटिस्फाई करछि। तो हमको फिफ्थ रिलेशन मिलला। तो 1 3 रो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करिबा 1 1 देन 1 3 देन 3 1 देन आसीबो 3 3 ठीक अच्छे। तो गोटे 2 अच्छी, तो 2 2 नेक्स्ट एलिमेंट हे जीवो। तो हमर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस हमको मिलगला 5। तो या ठो आ किछि डिफरेंट आसीबनी। यदि सेट रो एलिमेंट्स 1 2 3 अछि, देन टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इक्वल टू हमको मिलला 5 ठीक अच्छे। तो मु फर्स्ट सेट रे 1 2 3 नहीं कि फाइंड करली, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस मिलला हमको 5। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस फाइंड करिवार अछि तुम आगे पार्टीशंस फाइंड करिवो। तो जेतेटा पार्टीशन हे जीवो बस एति की नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस हबो ठीक अच्छे। तो गोटे सेकंड एग्जांपल भी हमें सॉल्व करिबा, एग्जांपल नंबर 2। तो मु लेट नहीं गले, लेट a इक्वल टू बस 2 एलिमेंट्स यूज कली 1 2, बस ये मते बस नंबर ऑफ पार्टीशंस कर देला मैंने हमरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस हे जीवो। तो मोर फर्स्ट पार्टीशन तो 1 देन 2 ठीक अच्छे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गला। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस तो यार कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 हे जीवो एंड 2 2 हे जीवो। तो क्लियरली हमारा ये रिलेशन टा आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी तो हमारा ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो रिलेशन ला आइडेंटिटी रिलेशन। देन यार सेकंड पार्टीशन तो 1 2, तो से सेम सेट भी तो ये सबसेट ना, तो बस ये हमको मिल जाओ सेकंड रिलेशन। तो यार कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करिबा 1 2 1 1 आगे कर देबा, देन 1 2 देन 2 1 एंड आसीबो 2 2 लास्ट एलिमेंट ठीक अछि। तो रिलेशन टा क्लियरली हमरो यूनिवर्सल रिलेशन।
universal relation टा always an equivalence relation. In this case total number of equivalence relations इक्वल्स टू हमको मिलला 2 तो इक्विवेलेंस रिलेशंस फाइंड करिवार अछि तो इंपोर्टेंट पार्ट ला पार्टीशंस तो नंबर ऑफ पार्टीशंस इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस है जीव बस तुम आगे पार्टीशंस फाइंड करिवो देन इजीली तुमको मिल जीव नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस नेक्स्ट हमें डिस्कस करिबा नंबर ऑफ फंक्शंस let f is a function defined from set A to set B ठीक अछि तो मुन f ने छै defined from set A to set B number of elements of A equal to m number of elements of B equal to n ने छै ठीक अछि then total number of functions from set A to set B equals to n to the power m or number of elements of B power n number of elements of A. The total number of functions का formula मिलला n to the power m. For example, let A equal to 1, 2, 3. मुने छे let A equal to 1, 2, 3 and set B equal to A, B. In this case number of elements of A equal to 3 अच्छे number of elements of B equal to 2 अच्छे तो total number of functions equals to formula n to the power m or number of elements of B to the power number of elements of A तो number of elements of B अच्छे 2 to the power 3 तो 2 to the power 3 equal to हमारा 8 तो total number of functions मिलला 8 ठीक अच्छे then next तो हमें डिस्कस करिबा number of 1 1 or injective functions number of 1 1 or injective functions number of 1 1 or injective functions तो इंजेक्टिव फंक्शन हमारा डिफाइंड हमारा कंडीशन अछि तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ फंक्शन तो हमारा डिफाइंड हेतिबो a to b मुनेले ठीक अछि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b यदि ए कंडीशन सेटिस्फाई कला दे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन डेफिनेटली डिफाइंड हबो ठीक अछि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हमारा डिफाइंड हबो तो लेट नेगली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इक्वल टू मो n ने छै तो हमरो दीटा केस आसीबो फर्स्ट केस ला व्हेन m less than or equal to n तो in this case हमारा number of 1 1 on injective function रो formula npm तो n equal to here number of elements of second set m equals to number of element of first set p for the permutation और हमारा formula अप्लाई कले n factorial divided by n minus m रो factorial बस ये formula में यूज करके easily number of 1 1 functions find करी परिया but condition करना m टा less than equal to n होथिबो but आ गोटे भी केस हमरा सिबो second case when m greater than n यदि m टा हमरो greater than n हे जीवो तले ए केस रे 1 1 फंक्शन और डिफाइंड हुए नहीं तले नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस रो फॉर्मूला ला 0 तो बस हमको आंसर मिलिबो 0 तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कहला माने आंसर आसीबो 0 यदि m टा greater than n थिबो 0 हबो m यदि लेस देन और इक्वल टू n थिबो देन फॉर्मूला अप्लाई करिवो npm और तरह फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाय n माइनस m रो फैक्टोरियल For example, let a equal to 1, 2, 3 nali and b equal to here a, b, c and d nali. Check कर हमारा number of elements of a equal to 3 अच्छे and number of elements of b equal to 4 अच्छे.
तो क्लीयरली हमर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी अच्छे ताले केस रे वन वन फंक्शन डिफाइंड हो देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस और इंजेक्टिव फंक्शंस नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमें वन वन को एमती भी रिप्रेजेंट करि परियो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस रा फार्मूला 4p3 हे जीवो और फार्मूला अप्लाई कले 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 3 रा फैक्टोरियल तो ये 24 है जीवो 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल तो 1 है जीवो तो हमको आंसर मिला 24 1 1 फंक्शंस ठीक है देन सेकेंड एग्जांपल let a equal to nearly 1 2 3 and b equal to usually a b c ठीक अच्छी तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा इक्वल अच्छी तो क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a equal to 3 अच्छी equal to number of elements of b अच्छी in this case number of 1 1 functions equal to 3 p3 है जीवो और दिस इक्वल टू हमें डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल भी कही परियो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल तो 1 तो हमें डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल भी यूज करी परिबा तो इक्वल्स टू हमको मिलला 6 तो ले सेकंड एग्जांपल आंसर मिलला 6 देन थर्ड एग्जांपल तो थर्ड एग्जांपल में लेट नहीं गली a इक्वल टू 1 2 3 b equal to here nearly ab तो ये हम कौन कची ना a रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b ने छी तो here नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a equal to 3 अछि एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b equal to हमारा 2 अछि क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a टा हमारा ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b अछि तो ए केस रे हमारा वन वन फंक्शन और डिफाइंड हबनी तो इन दिस केस नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस इक्वल टू कौन होना 0 तो ये वन वन फंक्शन डिफाइंड हुए नहीं तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमारा 0 है जीवो ठीक है तो मो फर्स्ट एग्जांपल रे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटा लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ने छी सेकंड रे n ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ने छी तो गोटे केस रे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एटा ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी तो हमारा लेस देन इक्वल थिला हमें npm यूज करिबा यदि ग्रेटर देन तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट थिबो तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन तुम्हारा 0 हे जीवो ठीक अछि तो नेक्स्ट ला नंबर ऑफ ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन तो हमरा वन वन फंक्शन डिस्कस हे करने एबे ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन डिस्कस करिबा तो ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन डिफाइंड हबार कंडीशन ताकि तमे फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b चूज करिबा ठीक अछि तो मो नेचे फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a equal to let m नहीं गली and number of elements of b equal to n नहीं गली तो onto function defined होची माने तो clearly number of elements of a टा greater than equal to number of elements of b होती है ये condition satisfy गला then हमारा onto function defined होगा otherwise onto function defined हुए नहीं तो से केस यदि लेस है जीवो तो number of onto function हमारा 0 ही आसे जीवो ठीक है जी तो नंबर ऑफ onto फंक्शन केमती फाइंड करिबा तो तापे हमरो फार्मूला अछि तो हम फर्स्ट केस हमें कंसीडर करिबा व्हेन m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n ठीक अछि तो और हमें यूज करि परियो m टा हमरो ग्रेटर देन इक्वल टू n यदि m हमरो ग्रेटर देन इक्वल टू n अछि देन टोटल नंबर ऑफ onto फंक्शंस रा फार्मूला समेशन r इक्वल टू 1 to n minus 1 to the power n minus r into ncr into r to the power m बस ये फार्मूला में यूज करके इजीली नंबर ऑफ onto फंक्शंस फाइंड करि परिबा फॉर एग्जांपल let a equal to मो 1 2 3 नोची तो मो एग्जांपल है 1 2 3 नोची तो यार मींस ना जे एग्जांपल है तो एग्जाम रे भी ओनली 1 2 3 आसीबो किछि भी एलिमेंट्स आसी परिबा बट मो नेची 1 2 3 3 एलिमेंट्स नेची एंड b रा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू मो 2 नेली ठीक अछि a एंड b नेची तो क्लियरली हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इक्वल टू हमारा m अछि तो m इक्वल्स टू हियर हमारा 3 अछि एंड n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इक्वल नंबर ऑफ 2 अछि ठीक अछि देन हमें नंबर ऑफ onto फंक्शंस रा फार्मूला अप्लाई करिबा नंबर ऑफ onto फंक्शंस
इक्वल्स टू तो फॉर्मूला अप्लाई कले समेशन r इक्वल टू 1 तो हमर 2 अछि तो r इक्वल टू 1 टू 2 हे जीवो माइनस 1 टू द पावर n माइनस r तो हमर 2 माइनस r रहला इनटू n cr ये 2 cr रहबो देन r टू द पावर हमर m तो एटी हमर m रहबो n नुए एटा टिके मिस्टेक अछि r टू द पावर m रहबो तो m इक्वल टू 3 अछि तो r टू द पावर 3 रहबो बस एटा को हमें सॉल्व करले हमको मिल जिवो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस तो r इक्वल टू 1 पुट करिवा तो दिस इक्वल r इक्वल टू 1 पुट कर ले माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस r तो 1 ही गला इनटू 2c1 इनटू r अछि 1 1 टू द पावर 3 देन r इक्वल टू 1 टू 2 माने r इक्वल टू 1 यूज करि परियो r इक्वल टू 2 भी यूज करि परियो तो r इक्वल टू 2 पुट कर ले माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 2 तो 2c2 इनटू 2 टू द पावर 3 तो माइनस 1 टू द पावर 1 अछि तो ये माइनस 1 हे जीवो nc1 तो n तो 2c1 हमर 2 हे गला 1 रो क्यूब तो 1 हे जीवो ठीक अछि देन माइनस 1 टू द पावर 0 तो हमर 1 हे जीवो 2c2 तो 1 2 टू द पावर 3 हला 8 ये माइनस 2 मिलला प्लस 8 तो माइनस 2 प्लस 8 इक्वल टू 6 तो हमको टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल टू मिल गला 6 ठीक अछि तो सपोज हमर m टा ग्रेटर देन इक्वल टू n थिबो तले हमर इतने तो ऑन टू फंक्शन डिफाइंड हबो आ टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फाइंड करिवार फार्मूला समेशन r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 टू द पावर n माइनस r ncr आउट r टू द पावर m हे जीवो ठीक अछि देन सेकंड केस when m तो हमर इट ग्रेटर देन इक्वल टू n नि अछि तो हमें सेकंड केस रे हमें लेस देन n यूज करिबा ठीक अछि तो when m लेस देन n तो in this case number of onto functions equals to 0 हे जीवो तो ये केस रे onto function defined हुए नि तो number of onto functions equal to 0 हे जीवो तो हमर m greater than equal to n थिले फार्मूला अप्लाई करिवो यदि m टा लेस देन n थिवो देन आंसर 0 कर देबो तो हम कितने एग्जांपल भी सॉल्व करिवो onto functions पर बेस करिके ठीक अछि तो एग्जांपल नंबर 1 सपोज मोर फंक्शन डिफाइंड अछि a to b a equal to मु यूज करली 1 2 3 and b equal to nearly a b ठीक अछि two elements ने छी then number of onto functions equals to तो हमें ए फार्मूला तो यूज करके इजीली फाइंड करि परिबा ऑलरेडी हमें करि सारिनी बट तार आ गोटे भी शॉर्ट ट्रिक अछि तमे केमती फाइंड करिबा न फर्स्ट सेट रो एलिमेंट 3 अछि तमे 3 फैक्टोरियल लगे कर देबा न सेकंड सेट रे हमरो 2 एलिमेंट्स अछि माने 2 प्लेसेस अछि तमे 3 एलिमेंट्स को 2 प्लेसेस रे डिस्ट्रीब्यूट करिबा तो केमती डिस्ट्रीब्यूट करिबा तर कंडीशन ला ईच प्लेस रे हमरो 1 एलिमेंट एटलीस्ट 1 एलिमेंट रोथिबो तमे 3 को भी दुईटा पार्ट डिवाइड करे हमरे 1 2 रे डिवाइड करि परियो नले एमती 2 1 रे भी डिस्ट्रीब्यूट करि परियो दुईटा केस रे ही डिस्ट्रीब्यूट हे परियो तले हमें आंसर केमती करिबा ना 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय तो आ गोटे केस ला 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल बस ये को सिंपलीफाई करले हमको आंसर मिल जीवो तो ये ला 6 बाय 1 फैक्टोरियल तो 1 2 फैक्टोरियल तो हमरो 2 6 बाय तो ये भी 2 मिलला तो दिस इक्वल ये 3 प्लस 3 तो हमको 3 प्लस 3 इक्वल टू हमको 6 देखा हमारा फार्मूला अप्लाई करले पे हमको 6 मिलला तो हमें शॉर्ट ट्रिक रे गली पे हमको 6 मिलला तो डेफिनेटली इजी हबो तो और भी गोटे तुमरो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला अछि यदि सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इक्वल टू 2 थिबो देन नंबर ऑफ onto functions रो भी फार्मूला अछि नंबर ऑफ onto functions रो फार्मूला 2 to the power n minus 2 तो इट n equal to here करना number of elements of first set तो number of elements of n equal here number of elements of first set तो this equal to 2 to the power हमरो 3 हे जीवो minus 2 तो 2 to the power 3 8 minus 2 equal to 6 तो हमको सेकंड मेथड रे भी मिल गेला number of onto functions equal to 6 तले onto functions फाइंड करिवार तो यदि b रो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थिबो शॉर्टकट यूज करिवो अदर केसेस रे यूज करियबनी तो ये मेथड फाइंड करि परिबो और तुमरो फार्मूला रे तुमे फाइंड करि परिबो ठीक अछि तो सेकंड एग्जांपल सपोज फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b अछि a इक्वल टू
मुनेली 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू यूज कली ए एंड बी ठीक अच्छे तो मो फर्स्ट सेट रो 4 एलिमेंट्स नहीं सेकंड सेट रो 2 एलिमेंट्स नहीं देन आम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फाइंड करिबा तो ये फर्स्ट मेथड भी तुम सॉल्व करि परिबो सेकंड मेथड भी सॉल्व करि परिबो सेकंड मेथड सॉल्व करिवो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी तो 2 अछि तो 2 टू द पावर n इक्वल हियर 4 तो 2 टू द पावर 4 माइनस 2 तो 2 टू द पावर 4 ला 16 माइनस 2 इक्वल टू 14 ठीक अछि तो हमरो सेकंड मेथड हमको 14 मिल गला यदि हम सेकंड फर्स्ट मेथड यूज करिबा then हमारा number of onto functions equal to the number of onto functions equal to तो हमारा 4 फैक्टोरियल हमको बस 2 प्लेसेस से डिवाइड करिवार अछि तो हम केमते डिवाइड करिबा ना 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल और भी हे परिबा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल बस याको सिंपलीफाई करिवो तो ये 24 बाय तुम्हारा 6 हे जीवो तो 4 + 4 तो हमको 4 + 4 तो ये हमको मिल जीवो ये 4 अच्छी है 24 6 मिल जीवो तो इक्वल टू 8 + 6 ला 14 तो ए केस रे भी हमको 14 मिलला ठीक अछि तले हमरा सेकंड एग्जांपल आंसर हे जीवो नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू 14 यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी हमको 2 देथिवो तले बे यूज करि परिबा 2 टू द पावर n - 2 अदर केसेस तुम यूज करि परिबनी बट तुम ए मेथड इजीली सॉल्व करि परिबो तो ये मेथड केमती करिवो यदि हमको 4 देछि तो हमको सेकंड रो 2 एलिमेंट्स अछि तो हमें 4 को दीटा प्लेस रे डिस्ट्रीब्यूट करिवा तो केमती डिस्ट्रीब्यूट करिवो ना जेमती तुम्हारा ईच एलिमेंट ईच प्लेस तुम्हारा नॉन एम्प्टी रो थिबो ठीक अछि नेक्स्ट एग्जांपल तो हमर दीटा एग्जांपल हेछि तो हमें थर्ड एग्जांपल भी सॉल्व करिबा तो थर्ड एग्जांपल ले मो लेट नै गेली f डिफाइंड फ्रॉम a टू b ठीक अछि तो a इक्वल टू यूज कली 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू मो नेछि a b c तो एठी मो 3 एलिमेंट्स नेछि सेकंड सेट रो तो एठी हमर से 2 टू द पावर n - 2 अप्लाई करले हमर रॉन्ग हबो तो एठी हमें कोन करियो ना से फर्स्ट मेथड करिबा तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल्स टू तो हमारा 4 एलिमेंट्स अच्छे हियर 3 अच्छी तो हमें 3 प्लेसेस से डिवाइड करिबा केमते डिवाइड करिबा ना 1 1 2 भी करि परिबा 2 1 1 भी करि परियो 1 2 1 भी करि परियो ए 3 केसेस रे ही सेटा हमरा डिस्ट्रीब्यूट हे परिबा आ अदर केसेस रे हे परिबानी तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस रो आंसर आसीबो 4 फैक्टोरियल तो रहइबो हियर तो 4 एलिमेंट्स अछि 4 फैक्टोरियल तो हमरा फर्स्ट केस टा 1 1 2 तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कर देबो देन सेकंड टर्म आसीबो 4 फैक्टोरियल बाय 2 1 1 तो 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल देन थर्ड टर्म आसीबो 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ठीक अछि तो ये तो हमरा 24 डिवाइड बाय 2 तो 24 डिवाइड बाय 2 है जीवा प्लस 24 डिवाइड बाय 2 तो ये 12 प्लस 12 प्लस 12 इक्वल टू हमको मिल रहा 36 ऑन टू फंक्शंस ठीक है देन फोर्थ एग्जांपल f डिफाइंड फ्रॉम a to b नेछि लेट a इक्वल टू 1 2 3 नेली ठीक अछि एंड b इक्वल टू यूज कली सेम a b c तो एठी करना मो a and b रो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नेछि तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल्स टू तो सेमती हमें 3 प्लेसेस रे डिस्ट्रीब्यूट करिया बने 1 1 1 आउ तो किछि केस पॉसिबल नो तो ए केस रे तुम डिस्ट्रीब्यूट करि परिबो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अछि 3 फैक्टोरियल 3 अछि तो 3 फैक्टोरियल तो ये 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल तो तुम्हें डायरेक्ट यूज करि परिबो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यदि इक्वल एलिमेंट्स थिबो तो ए रो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 अछि तो 3 फैक्टोरियल यूज करि परिबो यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 4 थिबो तुम डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल भी करि परिबो ठीक है यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल थिबो तो 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 तो हमरो फोर्थ एग्जांपल आंसर मिली गला 6 ठीक अछि तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हमरो डिस्कस हे गला देन लास्ट केस हमरो मिललो नंबर ऑफ bijective functions number of bijective functions तो bijective function defined हबार कंडीशन
तो f तो डिफाइंड हे थिबो a to b, number of elements of a equal to m, number of elements of b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इक्वल टू बी आमर एम ही थिबो, ठीक अच्छे। और आम एन नहीं जीवा, बेटर हम एन नहीं जीवा। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एन अच्छी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी एन अच्छी, यदि इक्वल थिबो देन आमर ऑनटू बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड हो। बाइजेक्टिव माने 1 1 एंड ऑनटू। तो आमर बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड हबार कंडीशन लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये कंडीशन ही बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड हो, आउ अदर केसेस रे बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड हुए नहीं, ठीक अच्छे। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस रो फॉर्मूला, number of bijective functions functions रो फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ n अच्छी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b n अच्छी, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस रो फॉर्मूला n फैक्टोरियल, ठीक अच्छे। देखिए हमर नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस इक्वल थिले भी n फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस रो फॉर्मूला तो हमें ऑलवेज करना बना n फैक्टोरियल यूज करिवो। तो रीजन ला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इक्वल टू n अच्छी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इक्वल n अच्छी, तो हमें n फैक्टोरियल यूज करिवो। और भी हमर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो फैक्टोरियल भी यूज करि परिबो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी रो फैक्टोरियल भी हम यूज करि परिबो। फॉर एग्जांपल लेट a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू लेट मु नहीं गेली d e f, ठीक अच्छे। खाली एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं से किसी प्रॉब्लम होबनी, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमर इक्वल अच्छे। अब फंक्शन डिफाइंड हे थिबो हमर a to b। इन दिस केस नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव और भी हमें देखो कही परिबा ना 1 1 एंड ऑनटू, ठीक अच्छे, 1 1 एंड ऑनटू। द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस और 1 1 ऑनटू इक्वल टू सिंपल हमर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 3 अच्छी, तो हमें डायरेक्ट यूज करिए 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, ठीक अच्छे। तो हमको नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस का फॉर्मूला मिलला n फैक्टोरियल, बट ऑनटू नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस में तुम्हें समेशन रो फॉर्मूला यूज करि परिबा, अदरवाइज शॉर्टकट ट्रिक भी यूज करि परिबा। तो हमरो नंबर ऑफ रिलेशंस और नंबर ऑफ फंक्शंस रो पूरा कंप्लीट डिस्कस हे गला, ठीक अच्छे।